Good morning, students. So yesterday we had started to revise carbohydrate, and we had seen up to tautomerization of monosaccharides. After that, we had seen about the oxidation and reduction. Now today, I'm going to revise dehydration. So here, when treated with the concentrated sulfuric acid, these monosaccharides, they will undergo dehydration process. They will eliminate near about 3 water molecule. Okay, so therefore, hexoses, they will give hydroxymethyl furfural, and pentoses, that will give furfural on this dehydration process. So these furfurals, they can condense with the phenolic compounds, for example, naphthenol, and they will form colored product. So this chemical basis, it is seen in the Molex test. So in case of oligosaccharides or polysaccharides, they will first hydrolyzed into monosaccharides, and after that they will undergo dehydration process. Then Bial's test. Bial test, so when pentoses, they will react with the strong hydrochloric acid, they will form furfural, which will again react with the orsinol, and they will form the green color complex. So this Bial's test, it is useful for detection of xylose in our urine when there will be pentosuria. The next test is Musis acid test. So galactose, when react with nitric acid, they will form one insoluble crystalline substance, that is the Musis acid. Then we had seen about the osazone formation. So phenylhydrazine in acetic acid, when boiled with the reducing sugar, so they will form osazone. So here, the first 2 carbon, that is for carbon number 1 and carbon number 2, they will involve in this osazone formation. The sugar that will differ in their configuration on these 2 carbon, that will give same type of osazone. Okay, so here glucose, fructose, mannose, they all will give same type of, means needle shaped type of osazone. Reducing disaccharide will also give osazone. So here maltose, it will form sunflower shape osazone, and lactose, it will form puff shape osazone. Then formation of ester. So alcoholic group of the monosaccharide, that will be esterified by non-enzymatic or enzymatic reaction. So esterification of carbohydrate with phosphoric acid, it is common reaction in the metabolism process. So glucose 6-phosphate and glucose 1-phosphate, these are good examples which will give ATP. So they are called as ATP donors. Okay, so these ATP donors, they will donate ATP and they will convert into ester. Then glycosides. Glycosides, they are formed when hemiacetal or hemiketal hydroxyl group of aromatic carbon of carbohydrate, they will react with the hydroxyl group of another carbohydrate or non-carbohydrate. For example, non-carbohydrate के example हम मिथिल अल्कोहल दे सकते हैं, फिनॉल दे सकते हैं, या ग्लिसरॉल दे सकते हैं. तो the bond
will form here. That bond is called as glycosidic bond, and non-carbohydrate when present, so they are called as aglycon. Okay, so glycosidic bond and aglycon, समझ में आया आप लोगों को? Yes or no? Yes, ma'am. Then monosaccharides, they will held together by these glycosidic bonds, and here as they will held with each other by this glycosidic bond, so they will form disaccharides, oligosaccharides, polysaccharides. How we will give the naming of this glycosidic bond? So the naming of this glycosidic bond, it is based on linkage between the carbon atoms and the status of the anomeric carbon, means वो अल्फा है या बीटा है ऐसा. तो जैसे lactose, which is formed by the bond between C1 of B-galactose and C4 of the glucose, so it is named as beta. अब फर्स्ट और फोर्थ ऐसा कार्बन है तो 1 to 4 ऐसा जो है तो हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नेमिंग करते हैं. अदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड they may be formed in disaccharides or the polysaccharides also. Now, what is the importance of this glycoside? So the importance is, the first one is the glucovaline. Glucovaline actually is the valine D-glucose glucoside. So this valine D-glucoside, it is natural substance which will impact the vanilla flavor. तो जो हम लोग वेनिला फ्लेवर आइसक्रीम में या केक में जो देते हैं उसके लिए. देन कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, दे आर कॉल्ड एज स्टेरॉइडल ग्लाइकोसाइड्स. तो डाइगॉक्सिन एंड द डिजिटॉक्सिन, they contain a glycon steroid, and they will stimulate the heart muscle for the contraction. The next is streptomycin. Streptomycin, it is the king of antibiotic, and it is used for the treatment of tuberculosis. It is a good glycoside. Then oban. Oban, it will inhibit sodium ions, potassium ions, ATPase, and it will block the active transport of the sodium ions. Then fluorizin. So fluorizin, it produces renal damage in the experimental animals. So these are some physiological importance of glycosides. Now let's see about the derivatives of monosaccharides. So there are several derivatives of monosaccharides, but the important derivatives that we are going to study now. So we are going to study 6 one. The first one is the sugar acid. So oxidation of aldehyde or primary alcohol group in this monosaccharide, they will result into the sugar acid. So gluconic acid, it is produced from glucose when the oxidation of aldehyde group takes place, which is present on the C1 group. And when the primary alcohol group, which is present on the 6th carbon, will get oxidized, so that time we will get glucuronic acid. Then the second is the sugar alcohol, which is also called as polyol. Here they are produced by reduction of aldoses or ketoses. So for instance, sorbitol, it is formed from the glucose and mannitol. ठीक है, तो actually sorbitol, it is formed from glucose and mannitol from mannose. Then
alditols. So alditols, when monosaccharides undergo reduction process, so that time polyhydroxy alcohol will form. That polyhydroxy alcohol is nothing but the alditol. So ribitol, it is the constituent of the flavin coenzyme. Glycerol and myoinositol, they are the components of lipids. Then xylitol, it is the sweetener. It is used in the sugarless gums, in the candies. Then amino sugars. So when one or more hydroxyl group of this monosaccharide, they get replaced by amino acids, then whatever we will get, that is called as amino sugars. So glucosamine, D-galactosamine, these are the example of it. They are present as a constituent of heteropolysaccharides. N-acetyl nuraminic, so N-acetyl nuraminic acid, it is a derivative of N-acetyl mannose and the pyruvic acid. So it is important constituent of glycoprotein and the glycolipids. Here, for N-acetyl nuraminic acid, we use one different term, that is the sialic acid. Some antibiotics, they also contain amino sugar. So, for example, erythromycin, which is used as a good antibiotic for ear infection, throat infection, eyes infection. So this erythromycin, it also contains amino sugar. The next one is the deoxy sugar. Deoxy sugar, these are the sugar which contain one oxygen less than the present in the parent molecule. यानी पेरेंट मॉलिक्यूल में जितने भी है उससे एक जो है तो ऑक्सीजन इसमें कम रहेगा. जैसे कि एक ग्रुप है तो CHOH, वहां पर जो है तो CHOH एंड CH2OH ऐसा दूसरा ग्रुप है, तो उसमें से वन ऑक्सीजन लेस हो जाएगा, देन इट विल बिकम CHOH का क्या हो जाएगा तो CH2 हो जाएगा, CH2OH का क्या हो जाएगा तो CH3 हो जाएगा. ठीक है. देन डीऑक्सीराइबोस, ये जो है तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डीऑक्सी शुगर है, क्योंकि ये जो है तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है डीएनए का. उसके बाद में जो है तो डी राइबोस, ये आरएनए का जो है तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है. फ्यूजन स्टेनिंग जो है तो वो स्पेसिफाई करते हैं इस डीऑक्सीराइबोस को, और डीएनए जो है तो टिश्यू में प्रेजेंट है या नहीं है इसके लिए. फ्यूकोस, ये जो है तो डीऑक्सी एल गैलेक्टोज है जो कि ब्लड ग्रुप एंटीजेंस में प्रेजेंट होता है, and it is also present in certain glycoproteins. Then the last derivative of this monosaccharide, that is the L-ascorbic acid. Actually ascorbic acid यानी क्या होता है तो विटामिन सी होता है. तो ये विटामिन सी जो है तो वाटर सोल्यूबल विटामिन है. विटामिन बी एंड विटामिन सी both are the water soluble vitamins. तो here the structure of this vitamin C, it is closely related with the monosaccharide. Monosaccharide के जैसा ही उसका structure. So this is all about the monosaccharide. Do you understood, beta? Do you understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now disaccharide. अब disaccharide जो है तो ये actually oligosacharide है. तो oligosacharide में कैसा है, disaccharide ये most common है. तो ये जो disaccharide है तो how it will be formed? So when two monosaccharide, they will link with each other by the glycosidic bond, then the
disaccharide will be formed. So here these are again crystalline, they are water soluble, and they are sweet in taste. So monosaccharide, oligosaccharide, both are sweet in taste, both are soluble in water, okay, and both are crystalline. So here these disaccharides, they are of two type. One is reducing disaccharide. So in reducing disaccharide, free aldehyde or free keto group will be present. So example of it is the maltose and the lactose. Then non-reducing disaccharide. So non-reducing disaccharide, they will not contain free aldehyde or free keto group. So example of it is the sucrose and the trehalose. Then let's see about maltose. So maltose, it is the compound of 2 अल्फा डी ग्लूकोज. जब 2 अल्फा डी ग्लूकोज जो है, तो पहला और चौथा जो फर्स्ट और फोर्थ जो कार्बन होता है, तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक होते हैं. तो फ्री अल्डिहाइड ग्रुप, इट विल बी प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट कार्बन एंड that will be of the second जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल रहेगा, तो उसके फर्स्ट कार्बन पे free aldehyde group will be present. So here the reducing when the reducing reaction will takes place, तो reducing reaction होने के बाद में यहाँ पर जो है, तो that will form oxazone formation. And I had already told you कि when it will form oxazone formation, तो sunflower shape oxazone formation will take place. Maltose, it can be hydrolyzed. So it will hydrolyze either with the dilute acid or with the enzyme. The name of that enzyme is maltase. So when it will hydrolyze, so that time it will gives rise to 2 molecules of alpha D glucose. Then isomaltose. In isomaltose, the glucose units, they will be held together by first and the sixth carbon. So first and sixth glycosidic linkage will be there. Then cellobiose. So cellobiose, it is another disaccharide. It is identical in structure with the maltose, except for beta 1,4. So that glycosidic linkage will not be there. यहाँ पर cellobiose जो है, तो this cellobiose, it is formed when hydrolysis of the cellulose takes place. Next one is the sucrose. So sucrose, we obtain sucrose from the cane sugar. I had already told you about it. And most commonly it is used in our daily life. It is also obtained from the beetroots. So sucrose, it is made up of 1 molecule of alpha D glucose and 1 molecule of beta D glucose. So 2 monosaccharides, they will held with each other by the glycosidic bond, and the glycosidic bond will be present between the first carbon of alpha glucose and the second carbon of beta glucose. So reducing group of glucose and fructose, they are involved in the glycosidic bond, and therefore sucrose, it is considered as non-reducing sugar, and it will not form oxazone formation. Okay, sucrose, it is a very important source of dietary carbohydrate in our diet. It is present in abundant amount. It is sweeter, more sweeter than any other sugar. Okay, तो ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, इन सब में ये ज्यादा जो है तो स्वीटर है. सुक्रोज, ये जो है तो स्वीटिंग एजेंट के तौर पर फूड इंडस्ट्री में यूज किया जाता है. इंटेस्टाइन में एक एंजाइम होता है सुक्रेज. तो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस सुक्रेज,
this sucrose will undergo hydrolysis process, and here glucose and the fructose, they will form, which will get absorbed in the small intestine. ठीक है, समझ में आ रहा बेटा? Yes, ma'am. Then inversion of sucrose. तो सुक्रोज जो है ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, लेकिन जब उसका हाइड्रोलिसिस होता है तो ये सुक्रोज जो है इट विल बिकम लिवोरोटेटरी। तो ये जो प्रोसेस है इसमें चेंज हो रहा है ना, ऑप्टिकल रोटेशन जो है डेक्स्ट्रोरोटेटरी से लिवोरोटेटरी में चेंज हो रहा है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इन्वर्शन। तो hydrolyzed mixture of sucrose that will contain glucose and fructose, and therefore it is called as invert sugar. So this hydrolysis of the sugar by enzyme sucrase, which is present in the intestine, okay, this sucrase, it is also called as invertase enzyme. So hydrolysis of this sucrose by the enzyme sucrase or invertase, or due to dilute acid, will liberate one molecule of glucose and one molecule of fructose. So it is postulated that sucrose, it is first split into alpha D glucopyranose and beta D fructofuranose. तो ये दोनों जो है दे विल बी डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होते हैं, लेकिन बाद में जो है तो बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज जो है तो ये लेस स्टेबल होने की वजह से इमीडिएटली इट विल कन्वर्ट इनटू बीटा डी फ्रुक्टोपायरानोज, एंड दिस बीटा डी फ्रुक्टोपायरानोज इट इज द लिवोरोटेटरी। ठीक है, दैट्स व्हाई this inversion of sucrose is possible in sucrose. The next one, the next disaccharide, it is the lactose. Lactose, it is present in the milk sugar. It is actually milk sugar which is present in the milk. Lactose, it is composed of beta D galactose and the beta D glucose, and they will held with each other by first to fourth carbon. So they will held with each other first to fourth, glycosidic bond will be there. Here anomeric carbon of C1 glucose, it is free, and therefore this lactose, it will undergo reducing property, and that will form the osazone. So the pup shaped or the Hag-Hawk shape osazone formation takes place with the help of this lactose. Lactose, it is most important carbohydrate for infants as well as in the adults, but it is more important for the infants. जो छोटे बच्चे होते हैं तो they only suck milk from the mother breast of mother, तो उनको सबसे ज्यादा जो एनर्जी सोर्स है तो ये लैक्टोज से ही मिलता है। तो दिस लैक्टोज व्हेन हाइड्रोलाइज्ड इन द इंटेस्टाइन in the presence of lactase enzyme, so that they will convert into glucose and galactose. This is about the lactose. समझा बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, then lactulose. अब lactulose जो है तो ये synthetic disaccharide है which contain galactose and the fructose. ये synthesized है, ये नेचुरल नहीं है, ये डाइजेस्ट भी नहीं होता, एब्जॉर्ब भी नहीं होता है इंटेस्टाइन में। तो इसका यूज क्या है? तो इट इज यूजफुल फॉर हिपैटिक इंसेफेलोपैथी, यानी यहाँ पर लीवर जब बहुत ज्यादा एनलार्ज हो जाता है जिसमें जो है
तो अमोनिया लेवल जो है हमारे प्लाज्मा में इंक्रीज हो जाती है, तो दैट टाइम इट इज यूज्ड। लैक्ट्यूलोज जो है तो ये क्या करेगा फिर, तो इट विल कन्वर्ट द अमोनिया इन द ल्यूमेन। जो हम ल्यूमेन है तो ल्यूमेन में अमोनिया को अमोनियम आयंस में कन्वर्ट करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे जो अमोनिया में अमोनिया की लेवल जो है प्लाज्मा के, तो वो रिड्यूस्ड हो जाएगी और वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, दैट विल एक्सक्रीट आउट। ओके, Yes, ma'am. now the next is the polysaccharide. A polysaccharide, poly means we had already seen, poly means same, so many. So here it will contain repeated units of monosaccharides, and they will be linked with each other by the glycosidic bond. So they are of important function for structure as well as storage. So polysaccharides, they may be linear as well as they may be in a branch form. So this is the contrast structure to protein and the nucleic acid. तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जो है तो लीनियर ही रहते हैं, ये लीनियर और ब्रांच दोनों फॉर्म में रहते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रांच पॉलीसैकेराइड है वो क्यों रहेगा, क्योंकि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है तो वो कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है मोनोसैकेराइड का वो फॉर्म कर लेता है, इस वजह से वो होगा। तो पॉलीसैकेराइड्स दे आर ऑफ टू टाइप, वन इज homopolysaccharide, second is heteropolysaccharide. So what do you mean by homopolysaccharides? So when on hydrolysis, if single type of monosaccharides will form, then they are called as homopolysaccharides because they get linked with each other of same type of monosaccharide. Same monotypes यहाँ पर होते हैं। ग्लूकैन जो है तो ये पॉलीमर है ग्लूकोज का, जो फ्रुक्टेसेंस है ये पॉलीमर है फ्रुक्टोज का। देन heteropolysaccharides, heteropolysaccharides जो है तो it will also undergo hydrolysis and it will form the mixture of some different types of monosaccharides, or it may form different derivatives of monosaccharides. That's why it is called as heteropolysaccharide. Okay, so homopolysaccharides, the example of homopolysaccharide is starch, glycogen. So starch, it is present in the reserve form in plants, and it is main source for all the animals as well as human being. जितने भी ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स है तो वो टोटली ये स्टार्च पे डिपेंड होते हैं। यहाँ पर द starch which is present in more or abundant amount in the cereals, that is also present in the roots, in the tubers. Roots जो हम खाते हैं जैसे बीटरूट्स वगैरह जो खाते हैं, कैरोट है, रेडिश है ना, then sweet potato है, then it is present in the form of tubers, तो tubers में हम potato खाते हैं। वेजिटेबल्स जो है तो उसमें भी ये अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो स्टार्च सबसे ज्यादा इसीलिए जो है तो पोटैटो में स्टार्च होता है कहा जाता है। स्टार्च जो है तो ये होमोपॉलीमर, दे आर कंपोज्ड ऑफ डी ग्लूकोज बाय and they will held with each other by the alpha glycosidic bond. तो इनको जो है ग्लूकासोन या ग्लूसन कहा जाता है। Starch, it consists of two types of polysaccharide components, water soluble amylase, amylose, sorry, not amylase, amylose, and the water insoluble amylopectin.
तो chemically, amylose, it is the long unbranched chain which consists of near about 200 to 1000 D-glucose unit, which will be held with each other by first and fourth glucosidic bond. And here amylopectin, ये जो है, so that will be linked with each other by the 1 to 6 glycosidic bond. तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ जो है तो amylopectin molecule, it contains few thousands of glucose unit and they look like a branch tree. तो यहाँ नियर अबाउट जो है तो 20 to 30 ग्लूकोज यूनिट जो है हर ब्रांच में प्रेजेंट होते हैं। स्टार्च जब हाइड्रोलाइज्ड होता है तो इट हाइड्रोलाइज्ड बाय अमाइलेज एंजाइम which is secreted by salivary gland as well as pancreas. So that time it will liberate dextrin and it will convert, this starch will convert into maltose and the glucose units. So amylase, it is again specified by the alpha glycosidic bond which is present between the first and the fourth carbon. Okay. Then what is dextrin then? To dextrin, they are the breakdown product of starch. Just now I had told you which enzyme is required for it. So amylase enzyme is required for it, or sometimes it may be breakdown with the help of some dilute acids. So starch subsequently hydrolyze with the these amylase and they will convert into dextrin. Finally, this dextrin will convert into maltose and the glucose. So various intermediate products which are soluble in the starch, that are amylodextrin. So amylodextrin that will look blue in color when we do the iodine coloration. स्टार्च जो है तो ब्लू कलर का दिखता है, अमाइलोडेक्स्ट्रिन जो है तो वॉयलेट कलर का दिखता है, एरिथ्रोडेक्स्ट्रिन जो है, एरिथ्रो ये वर्ड आया तो समझ लेना रेड कलर, वो रेड कलर का होता है, और एक्रोडेक्स्ट्रिन जो है तो वो कलरलेस होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है तो डेक्स्ट्रॉन ये पॉलीमर है ग्लूकोज का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। तो दिस डेक्स्ट्रॉन इट इज यूज्ड एज अ प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है या क्रोमेटोग्राफी की जाती है तो उस समय में ये डेक्स्ट्रॉन का यूज होता है। देन इन्यूलिन, इन्यूलिन जो है तो ये पॉलीमर है फ्रुक्टोज का, ठीक है। तो फ्रुक्टोसन जो है वो उसका एग्जाम्पल है। तो ये डहलिया नाम के जो प्लांट्स रहते हैं उसके बल्ब में, उसके बाद में गार्लिक में, अनियन में ये प्रेजेंट होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है तो नियर अबाउट 5000 तक होता है। जब ये जो है तो वाटर में सोल्यूबल होता है। इन्यूलिन ये बॉडी में यूटिलाइज नहीं होता, तो फिर किस लिए इसका यूज है? तो ये जो है किडनी फंक्शन का असरनिंग करने के लिए हम जो है तो इसका यूज करते हैं। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है उसका मेजरमेंट किया जाता है और वो मेजरमेंट में इन्यूलिन जो है तो वो काउंट होता है। डू यू अंडरस्टूड बेटा? मैम यस मैम। बोलो बेटा। मैम ट्राइग्लिसराइड्स वाला पार्ट नहीं करना है क्या? ट्राइसैकेराइड्स वाला पार्ट? तो मोस्ट कॉमनली जो है तो ट्राइग्लिसराइड्स का यूज नहीं है ना। अपने ट्राइग्लिसराइड का थोड़ा सा ही पार्ट दिया हुआ है ना अपने इसमें, तो आई विल रिवाइज इट टुमारो ना, कल मैं रिवाइज करती हूँ लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। मैम फिर पीपीटी में इंक्लूड करना है क्या? हाँ कर लेना ना, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देना, ठीक है। ओके मैम।
बचा हुआ जो पार्ट है ना बेटा, कल मैं आप लोगों को ये लेती हूँ, ठीक है। लेट मी टेक योर अटेंडेंस। मैम और जो क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स का जो पार्ट है उसमें मैम कुछ फोटोज जो है वो ब्लर दिख रही है। ठीक है मैडम, मैं वापस से एक बार भेज दूंगी आप लोगों को, ठीक है। ओके मैम। एनी मोर डिफिकल्टी बेटा? मैम, हाँ बोलो। ब्यूटा रोटेशन और इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज में क्या डिफरेंस रहेगा मैम? देखो, यहाँ पर जो है तो इन्वर्शन में क्या हो रहा, इन्वर्शन में जो सुक्रोज है तो उसका स्प्लिटिंग हो रहा है, उसका ब्रेकिंग हो रहा है, ठीक है। और रोटेशन में जो है तो सिर्फ जो पोजीशन है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल के वही चेंज होती है, ओके मैम। ठीक है। यस मैम। और any more questions? Do you have any doubt? Do you have any doubt beta? Can I stop today? I will continue with, I will take some topic which are remain here tomorrow, and then I will continue with the enzyme. कल एंजाइम का भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू मैम।